Hello, good morning. Today we will discuss about rubric. What is rubric? Source of rubric, types of rubric. In previous class, we see difference between repertory and materia medica, repertory and dictionary, in which we see rubric is language of repertory and symptoms is language of materia medica. So the word rubric originate from the Latin word rubrica, which means a heading or a guiding rule. The word rubric originates from Latin word rubrica. Rubrica is Latin word from which rubric is originated, which means a heading or a guiding rule. In repertory, rubrics are the headings and the subheadings which lead a group of remedies. रेपर्टरी में जो हम रूब्रिक्स देखते हैं उसके अंदर एक या अनेकों मेडिसिन होता है। चैप्टर्स के बाद मेन हेडिंग रूब्रिक्स होते हैं, फिर सब रूब्रिक, सब रूब्रिक में भी सब रूब्रिक्स। सो रूब्रिक इज द हेडिंग और सब हेडिंग इन द रेपर्टरी which leads a group of remedies or contains group of remedies in different grades according to individual repertory. According to D. Tarafdar, rubrics are repertorial languages in which a big sentence is expressed by a few words by proper arrangement with comma. डी तरफदार के अनुसार रूब्रिक्स रेपर्टोरियल लैंग्वेज या रेपर्टरी का भाषा है जिसमें एक बहुत बड़े सेंटेंस को एक वर्ड या फ्यू वर्ड्स में हम अरेंज करते हैं। इफ यू यूज रेपर्टरी you see different rubrics and many books available in market on the explanation of the rubric. Also, D. Tarafdar published a book, Rubric Explained, in which he gives explanation of main rubrics of Kent repertory and Boning-Hussain therapeutic repertory. So, rubrics are repertorial language in which a big sentence is expressed by few words by proper arrangement with comma. Rubrics are the converted form of the symptoms of a person or medicine. Rubric एक सिम्टम्स या किसी मेडिसिन, एक सिम्टम्स जो हम पेशेंट से लेते हैं या किसी मेडिसिन का सिम्टम्स का कन्वर्टेड रूपांतरित रूप या कन्वर्टेड फॉर्म है। रूब्रिक्स आर द लैंग्वेज ऑफ रेपर्टरी रिप्रेजेंटिंग द सिम्टम्स. सिम्टम्स यूजुअली लॉसेस देयर ओरिजिनल फॉर्म टू फिट इन द अरेंजमेंट ऑफ रेपर्टरी. कोई सिम्टम्स जब रेपर्टरी में फिट होता है रूब्रिक के फॉर्म में तो वो अपना ओरिजिनल और पूर्व रूप खो देता है. हाउएवर इन कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी द सिम्टम्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंजेस एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन रेपर्टरी in prover's language. This is the peculiarity or uniqueness of the concordance repertory, जिसमें पेशेंट, जिसमें प्रूवर के लैंग्वेज को
सेम फॉर्म में लिखा गया है, उसमें कोई चेंजेज या कन्वर्सन नहीं किया गया है। इसलिए कॉन्कॉर्डेंस रेपर्टरी का यूज हम मेडिसिन डिफरेंशिएशन के लिए कर सकते हैं, उससे हम किसी केस को रेपर्टराइज नहीं कर सकते हैं। rubrics are generally arranged in alphabetical order. General rubrics are main rubric under different sections. डिफरेंट सेक्शन और चैप्टर्स के अंदर जनरल रूब्रिक मेन रूब्रिक होते हैं, जिसके अंदर सब रूब्रिक सब रूब्रिक पाए जाते हैं। General rubrics contains large number of medicine. Sub rubric are subdivision or modified qualified version of main rubrics and important to narrow down the field of selections. Suppose किसी एक रूब्रिक के अंदर 100 या 100 मेडिसिन होगा। सपोज डिजायर स्वीट अगर 10 मेडिसिन होगा तो डिजायर स्वीट इन इवनिंग और मॉर्निंग में 3 से 4 मेडिसिन होंगे। सो सब रूब्रिक नैरो डाउन द नंबर ऑफ द मेडिसिन। In Kent's repertory, sub-rubrics are mainly mentioned as qualified rubrics by side, time, modalities. In this way, arrangement of sub-rubrics in Kent repertories present side, time, modality and extension. Similar rubrics are those rubrics which resembles or corresponds in meaning. Knowledge of similar rubrics helps to convert symptoms into correct rubrics. It gives a correct choice to physician while converting symptoms into rubric. Similar rubrics are those rubrics which resemble or corresponds in meaning. So lot of rubrics in Kent repertory as like similar rubrics. Knowledge of similar rubrics helps to convert symptoms into correct rubrics. It gives a correct choice to physician while converting symptoms into rubrics. However, they might cause confusion in beginners. शुरुआत के समय में जो बिगिनर्स या जो स्टूडेंट हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो सकती है। इन बोनिंग हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, rubrics are arranged in following orders: location and sensation, time, aggravation, amelioration, concomitant and cross reference. This is the system of arrangement of rubric in Boning Hussain therapeutic pocket book: location and sensation, time, aggravation, amelioration, concomitant and cross reference. In Kent repertory, arrangement of rubrics from general to particular. Example: patient desire to commit suicide but is afraid to die. Rubric is suicide, desire to, afraid to die. So this is symptoms and rubric. Sub-rubric. Sub-rubrics are subdivisions or modified qualified symptoms, qualified versions, forms of main rubrics and are important to narrow down the field of selection. In Kent's repertory,
Constriction externally is a rubric, as if caged with wires twisted tight and tighter is sub-rubric. In Kent's repertory, sub-rubrics are mainly mentioned as qualified rubrics by side, time, modalities and extension. So this is examples of sub-rubrics in Kent repertory. Similar rubrics. Clinical rubrics. Clinical rubrics related to the disease conditions are called clinical rubrics. Example is Addison's disease, anemia. This is related to clinical condition. Eliminating rubric. Eliminate, छांट देना, अलग कर देना. Eliminating rubric is the rubric which is used for elimination of apparently similar medicines in order to select the similimum. It can be the most important symptoms of the patient, preferably a general. Eliminating rubric is used for elimination of apparently similar medicine in order to select the similimum. 4-5 मेडिसिन अगर है तो उसमें हम मेडिसिन को किस आधार पर अलग करें या छांट दें, इसके लिए हम जिस रूब्रिक का यूज करते हैं दैट इज एलिमिनेटिंग रूब्रिक. इन बोनिंग हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक rubrics are arranged in following orders: blood circulation and fever, mind, location, sensation, glands, skin, sleep and dream, aggravation. In Boger's Boning-Hussain characteristics and repertory, rubrics are arranged in following order particular to general rubric. In Kent repertory, general to particular, and in Boger Boning-Hussain characteristics and repertory, particular to general. Side, time, modalities, extension. Side, time, modalities and extension. Source of rubric. Materia medica is the main source of rubric. The source of homeopathic materia medica are as follows: Hahnemann's materia medica pura, Hahnemann's chronic disease, Dr. Jorg's proving, Dr. Herring and American Provers Union, Dr. E.M. Hales, Dr. various proving and proving under American Institute of Homeopathy, individual proving published in journal, Allen's Encyclopedia in 12 volumes, Cyclopedia of Drug Pathogenesis 4 volumes, Herring's Guiding Symptoms 10 volumes, Clark Clinical Dictionary 3 volumes. These are the main source of the rubric which used in different repertory. We see difference between symptoms and rubric. Symptoms are the language of the patient or prover. Rubrics are the converted form of symptoms of a patient or prover in repertorial language. Symptoms may not guide us in repertorization. Rubric guide us in repertorization. Symptoms may be incomplete. Rubric is always complete.
symptoms, its source are empirical and scientific. Its source are scientific. So this is basic difference between symptoms and rubric. How to choose rubrics? rubrics का चुनाव सिलेक्शन कैसे करें? इट रिक्वायर्स फॉलोइंग स्टेप्स. विभिन्न चरणों के द्वारा हम इसका चुनाव करते हैं. नंबर 1 इज प्रॉपर केस टेकिंग. केस टेकिंग अगर हमारी गलत होगी, या तो पेशेंट के तरफ से, या पेशेंट जो कह रहा है वो मैं समझ नहीं रहा हूँ, या फिजिशियन समझ नहीं रहे हैं, या डॉक्टर क्या पूछना चाह रहा है पेशेंट नहीं समझ रहा है. एनी डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन और कन्वर्सन also leads to faulty interpretation and selection of rubric and also medicine. So selection of rubric requires proper case taking. Tapping out verification interpretation of the symptoms given by the patient and translating them into the language of materia medica and rubrics of repertory. So a physician must be accustomed about the language of the patient. If he properly understands language of patient, then language of patient converted into English or language of materia medica, then language of materia medica or symptoms converted into rubrics. This is the process. इसमें किसी भी स्टेप पर कोई भी गलती होगी, रिजल्ट गलत आएगा. इवन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. अगर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स गलत होगी तो डिजीज डायग्नोसिस गलत होगा. फिर पेशेंट सिम्टम्स एंड डिजीज सिम्टम्स में सेपरेशन गलत होगा, डायग्नोसिस भी गलत होगी, प्रोग्नोसिस भी गलत होगी, और मैनेजमेंट भी गलत होगा. और इस प्रकार से पेशेंट मेरे हाथ से, मेरे पास से चला जाएगा. सो ए फिजिशियन रिक्वायर्स प्रॉपर कोरिलेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स with the symptoms of the patient. Next is analysis and evaluation of symptoms and other data. Analysis and evaluation. So evaluation we done according to nature of the symptoms. Case contains maximum mental symptoms or general symptoms or particular symptoms. So first we decide the nature of the symptoms or case, then we select a repertory. Repertorization. Suppose a patient told headache bursting in nature located in frontal part, aggravate morning at 10 am, relieved by lying. So here symptoms is one, but rubrics: pain, head या head pain, nature bursting, location frontal part, aggravation morning at 10 am, emulation by lying. So 1, 2, 3, 4 and 5, 6 rubrics we obtain from one symptoms. So use of repertory is always depend upon the ability of the physician.
हम इसका जितना प्रयोग करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना हम इसका अच्छा से प्रयोग कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। अगर हम उसे खरीद करके बुक्स को अपने क्लिनिक पर टेबल पर रख देंगे तो केवल वो मोटी मोटी पुस्तक ही दिखेगी। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सो दिस इज द rubric, type of rubric, source of rubrics and utility of rubrics, difference between symptoms and rubric. Thank you.